there's a lot of debate and a good debate कि अभी तक वो इन्वेस्टर तैयार है क्या फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस, और वो डिबेट चलता रहेगा, राइट. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभी ऑल्टरनेट्स प्रोडक्ट को काफ़ी लेजिटिमेसी आ गया. ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेट्स, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, करंटली इट्स अराउंड 18.5-19 ट्रिलियन. In the next 5 years, it's expected to be 25 trillion, 24.5 trillion. Okay. सबसे बड़े जो ग्रोथ वेक्टर्स हैं, that is private capital, private credit. Okay. That is one data point I'm giving you. The second data point I'm giving you, अगर आप एक ग्रिड बना दें in terms of size of market and profitability of market. Okay. जहाँ पे यहाँ पे profitability होगा, यहाँ पे size होगा, alternates यहाँ होगा. Which means it's reasonably profitable and it's reasonably big. Okay. The third thing is that globally, alternates is dominated by institutions. So if I have to take that now into India, 15 to 20% of assets of family offices, institutions, etc. is alternates. Hedge funds बोल लीजिए, private credit बोल लीजिए. In India, it is in low single digits. Okay. AIF regulations have come in 2012 and we are already around 13 lakh crores as an industry. So we've grown pretty rapidly, but we are still not part of every investor's portfolio. It is now starting to happen. And I'm talking about pure this thing. If I look at PMS, discretionary is around 3.5 lakh crores. So 15 lakh crore के आसपास की industry as compared to mutual funds. Mutual funds have been around for 30 years plus. 75 lakh crore है. इसको 10-12 साल ही हुए अभी. Okay. And आप इसकी growth देख सकते हैं. The second data point is that अगर आप ध्यान से देखें ना, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है जब इंस्टीट्यूशंस आते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ETF का. 2001 में पहला ETF आया, करेक्ट. टिपिकली आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, विच आर वेरी सिमिलर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स. It takes 12 to 13 years for the markets to take off. And there are two reasons why it will take off. One is that there is some government sort of intervention which will happen, and the other is when institutions start putting in money. आप अगर इंडिया में देखें 2001 में पहला ETF आया था बेंचमार्क का, लेकिन ग्रोथ लास्ट 5-7 साल में ज़्यादा हुआ है बिकॉज EPFO उसको बोला पैसा डाल सकते हैं. Institution stepped in, liquidity increased, mutual fund सही है campaign. Now there are so many different types of ETFs. You know, it doesn't look, आपने जैसे SIP का बताया, ETFs भी वैसा ही है. Mind you, ETFs is a broking product on the mutual fund platform. Now let's take alternates. Alternates में अभी तक institutions को अलाउ नहीं किया है. इंश्योरेंस कंपनीज पैसा डाल सकती हैं, लेकिन आप जो EPFO वगैरह की बात करें, जिस दिन ये अलाउ किया, okay, you will have a lot of retail participation coming in through entities like EPFO. That is when the industry will really take off. And I think the regulator is working very closely with firms like IBCA to enable that. It's still some time off. So that is something which will really help. Of course, taxation and all of those things will help. But my sense is that if you start to benchmark the growth of the alternates business on the growth of the ETF business को 13-15 साल लगे. Alts को 2012 में आया, अभी 13 साल हो गए. Okay. The inflection point is here. इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है. एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो अभी हुई है, SIF को अलाउ किया है. Okay, that's an alternates product on the mutual fund platform. जी. There's a lot of debate and a good debate कि अभी तक वो इन्वेस्टर तैयार है क्या for a product like this, और वो डिबेट चलता रहेगा, right? But the fact of the matter is अभी alternates product को काफ़ी legitimacy आ गया. Okay, अभी लोगों के conversation में आ गए.